Good evening and welcome. Welcome to all the guests and all the regular participants to this Wednesday meet, our Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. Every Wednesday, so this is our weekly satsang. And the agenda for today is the spiritual law, the fifth spiritual law. Before we go to the topic of the fifth law, let us have a quick recap of what we have covered so far, because we had a 1 week gap in between for the Diwali celebration. So the first four laws, who would like to recap fast? A fast quick recap. What was the first law that we did? Law of, seems everybody was celebrating Diwali, huh? You've forgotten the. Okay, so I will do the quick recap. The first law was the law of you can say pure being or pure potentiality. Yes, here we saw who we are as a being. So human beings have we exist in the level of being. So being the law of being or the law of pure potentiality was the first law that we studied, correct? And we discussed and had a good discussion on that. And of course, the recordings are available in the YouTube. So those who have missed out can watch the recording, and you can contact me for the details of it, right? The second law that we talked was, what was the second law? The law of cause and effect, law of karma. So we discussed on that in detail. Then we went on to see the second law was law of giving and receiving. Yes, law of giving and receiving, which is of course very closely connected to the law of karma. Then we saw law of karma or cause and effect. And in the last session that we did, we saw the law of least effort. So we saw how we can live our life with minimum effort or effortlessness, no resistance, complete acceptance. And we had outlined some practices by which you can practice these four laws, correct? And we also studied that the moment you start practicing one law, all the other interconnected laws become active. So you get the benefits of all the laws that you have studied, because you don't actually practice these laws are actually driving your existence. So the moment you become aware of it, you start getting the benefits of these laws. Once you understand it, it automatically comes into your karma. How many of us have seen that? Once you know the spiritual laws and you study the spiritual laws, they automatically become part of your karma, and they impact your thinking, they impact your language, the speech, and of course, they impact the actions that you take. So thought, words, and action, our three tools of karma, they are all impacted by the wisdom of these spiritual laws. And the purpose of this series was that spiritual laws impact our beliefs. Yes. And we reinvent our beliefs, you can say that. So restructuring of our belief system in line with the spiritual laws, so that we get better understanding, more clarity, and live life with more wisdom. The divine wisdom guides us, and we are more fulfilled in our life because of this understanding. That is the purpose of this series. Yes. So now, having done the recap, if you have any kind of questions, you can ask me, and we will start that as a discussion. Yes, Sir Vijayji. Yeah, Shashidharji, what I was, my understanding was that whether one likes it or not, these are the laws which will anyways play in life. So whether we acknowledge them or do not acknowledge them, these are the things that run the life or run the universe, run everything. And our understanding will only help us to align and flow with it. Absolutely Perhaps. perfect. Yeah. Absolutely perfect. Very good. That is the right understanding, Vijayji. Yes. Okay. But only thing is, unless we know it, we will not realize it. Yes. Law of gravity is always applying. But then once we are aware of it, then we know, oh, okay, this law is helping me to achieve this. Like if you are going on a flight, you know the flight is possible only because of the law of gravity, correct? So there is some better understanding, more clarity, and that wisdom gives you insights and wonderful results in life. So it brings your mind at ease and your life at ease. That is the main purpose. Very good, Vijayji. And meanwhile, let me welcome Parvinji and Tarun Wadwaji. Welcome. Yes. Anybody else who wants to share anything before we start the session with the fifth law? And the fifth law is law of intention and desire. Now, very, very profound, very powerful.
and again a part of our daily life. Yes, anybody else who wants to share? How many of you have been watching the recordings? Okay, Vijay ji, yes, he often comments on the YouTube channel also. Praveen ji, yes, okay. Anybody else who has been watching? Those who have particularly missed out on the session, they should watch, because then there is a continuity and a better understanding. Yes, but I haven't seen many views, so I'm very sure not everybody is watching, and the watch time is also less, so nobody is watching it in full, I suppose, except for perhaps one or two participants whom I have named. Anyway, that is part of your spiritual journey. So all I can say is that these recordings are available, these programs, these meetings are available. Use these and progress on your spiritual journey. Correct? Yes, now we move on with the topic for today. The topic for today is law of intention and desire. How many of you have heard about this? Law of intention and desire. How this is close to our life? All of us have desires, right? हम सबकी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो डिजायर सबकी हैं, अब वो चाहे मेटेरियलिस्टिक हो या स्पिरिचुअल हो या जो मर्जी हो, बट all of us have desires. Human being का डिजाइन है, we desire for better version of life. So obviously we have a lot of desires. Yeah? So it can be in the area of health, it can be in the area of wealth, it can be in the area of relationships, overall quality of life, or you can say even your spiritual growth. So if you have a desire for spiritual growth, very good. So all these are desires. So let us first understand the basic idea of what is a desire. Yes, who would like to share your insight? What is a desire for you? Or what is the most important desire for you? I won't say the burning desire, but what is the most important desire for you right now in your life right now? Which area is really, really important? So who would like to share any desire that you have, so that then we can have some practical inquiry into what is the quality of desire and how do we go about manifesting this desire, correct? So we are not only interested in having a desire, we want that to be manifested in our life. So anybody who wants to share any desire that you have right now? I can share. I mean, since I've just gone through my surgery, Yes. My desire is to now, have a complete recovery, and also start leading a very healthy life. Okay. Going forward. Yeah. All right. Very good. So let's acknowledge Prajay ji. Yeah. So not only he is courageous enough to attend when he is not fully fit, yes, but that shows his curiosity and interest in his spiritual growth. So yes, health is a major concern for many people, and all of us want good health. Anybody who doesn't want good health? Bad question, right? Wrong question, I would say. Everybody wants good health. Obviously, we want to be fit. We want to have a fit, flexible, and healthy body. Yes. So, and more so if you are having some kind of a discomfort. अगर कुछ बीमारी नहीं है तब हम ज़्यादा उसके बारे में परवाह नहीं करते, लेकिन अगर कोई बीमारी आ गई या कोई तकलीफ आ गई तो और ज़्यादा फोकस आ जाता है कि नहीं मेरे को परफेक्ट हेल्थ चाहिए. Yes. Okay, this is good. Anybody else who has any other kind of desire? Because I want all of you to listen from your life. आपकी लाइफ में आज की डेट में क्या इंपॉर्टेंट है? If you look at from that point of view, this session will be more valuable for you, because then you can get valuable insights and you can distinguish something regarding your desire. Though I know many of you personally and I've been having discussions, so I know most of the desires, in which line are you working in your life, but still if you want to make it clear and obvious for yourself and others, you can share that. So Nikita ji, yes, go ahead. I want to achieve my work target before the end of the year. You haven't achieved your work. My desire is to achieve my work target. Work target. That means at workplace you have some desires. Maybe you have some promotions or bonus or incentives in mind, and you want to fulfill your target so that you can qualify for that. Correct? Very good. So it is in the area of it is actually in the area of wealth and career and income. Yes, and if you're in a businessman, if you're involved in a business, then you're looking for profits and you can say abundance, so that you can share that with your employees and your colleagues.
So that is something, correct? So yes, Arun, welcome. So these are the kind of desires we have, right? Now let us first look into what is the, you can say, ingredients of desire. Desire में कैसा होता है? सबसे पहले तो एक हमारी desire होती है which is coming from the space of lack. मेरे पास ये नहीं है इसलिए मुझे ये चाहिए, करेक्ट? या इस चीज की कमी है इसलिए मुझे ये चाहिए. तो चाहिए तो क्लियर है, लेकिन वो आ कहां से रहा है? फ्रॉम ए स्पेस ऑफ लैक. I don't have a partner in my life, so I am desperately wishing for a life partner. Possible? Yes. तो कहां से आ रहा है? ये लैक से आ रहा है. मेरे पास इनकम कम है. I don't have the required bank balance in my account, so I want a lot of money to fulfill my desire of a luxurious lifestyle or a comfortable lifestyle. Yes. So again, coming from a space of lack. And sometimes it is a lack of self-worth. I have failed in many attempts in clearing an exam. Now I am desperately wanting to clear it because this is the last effort. This is the last time. After that, I am disqualified to apply for that exam. Could be IAS, could be whatever. Correct? Or if it is a student, एक स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है और फेल हो रहा है, तो उसकी डिजायर क्या? किसी तरीके से पास हो जाओ. ये डिजायर है. क्यों? अभी तक मैं फेल हो रहा था. तो अगेन कमिंग फ्रॉम ए स्पेस ऑफ नॉट अकम्प्लिशिंग द डिजायर्ड रिजल्ट. अभी तक मिला नहीं है तो लैक से चल रहा है वो भी. एवरीबडी क्लियर? तो वन स्पेस इज डिजायर इज कमिंग फ्रॉम ए स्पेस ऑफ लैक, एंड स्पेस ऑफ लैक इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम ए प्लेस ऑफ आई एम स्मॉल, I am weak, I don't have the ability to achieve, I am not worthy of success. These are the thoughts which are running in the background, which is resulting in a failure or tragedy, or you can say rejection in life. I hope all of you are connecting with me. If there is a disconnect, you should raise your hand and have a discussion, correct? तो अगर आप स्पेस आपका जो है वो लैक से आ रहा है, एंड फिर आप जो मर्जी विश कर रहे हो, इंटेंट कर रहे हो, डिजायर कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? इट इज मोर लाइक होपिंग एंड प्रेइंग. हे भगवान ये कर देना प्लीज, काइंड ऑफ स्टफ. एंड द वर्डिंग्स ऑफ योर डिजायर इज सच दैट यू नो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ है. यस, अभी तक हुआ नहीं है, एंड देन यू आर सेइंग हे भगवान बचा लेना, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये 40 मार्क्स लाओ कहीं से. होता है ये बच्चों को. इफ यू रिमेंबर योर स्कूल डेज, इट वॉज अ नॉर्मल थिंग. 10th के एग्जाम या 12th के एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले सब बड़े भक्त हो जाते थे, सब मंदिर भाग रहे हैं. 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाते थे उस समय, बोलते थे हे भगवान किसी तरीके से इसको पास होना पास हो जाए, जिसको 80% चाहिए 80%, जिसको 90% चाहिए 90%. करेक्ट? तो हम तरीके से भगवान को रिश्वत देने की कोशिश करते थे कि हे भगवान रिजल्ट बचा लेना बस. होता था ये. Now we have to understand, we already know, if you are having a desire with fear, you are very clear that it is not going to happen. 90% of the people who have a desire know that it is not going to happen. And if you are approaching a desire with fear, most likely what you fear, you will attract that in life. होता है कि नहीं? फेल ना हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं. You're focusing on failure and you will get a failure. If you're looking for a life partner and if you're proposing to a man or a woman of your choice and then you're waiting, हे भगवान रिजेक्ट ना कर दे, तो वो मोस्ट लाइकली रिजेक्ट ही होगा. You understand what I'm trying to say? You attract what you fear. We attract what we fear in life. How many of you have experienced this? So it is very, very important that we approach this whole concept of fulfilling our desire by actually knowing what is our desire. पहले डिजायर को अच्छी तरह हम इंक्वायर तो कर लें कि ये डिजायर क्यों चाहिए. कुछ चीजों में तो हमको
डिजायर को क्वालिफाई भी करना पड़ता है, वाकई में ये चाहिए या नहीं चाहिए. So you should question all your desires. I have this desire. Why do I desire this? Correct? So we will have more insights on this, but first, Tarun, you have raised your hand. Please go ahead. So it was regarding the same question which you have asked, that please raise your hand who has felt that whatever you fear, sometimes that happens, that comes Okay. true. Okay. I thought you wanted So to share this is, something. That's fine. Okay. yeah. And yes, I wanted to speak earlier also about the desire, that when you were asking for the what desire you have. So after interacting with you from the last 1 year, the mindset has shifted a lot. And now the only desire is to follow your footprints, giving back to society. That is the only desire, giving back to society happiness, peace, and joy. Okay. This is what I pray for every day in the morning. Okay. Very good. Wonderful. Let's The acknowledge biggest Tarunji. desire. He has gone 5 steps ahead and come up with a stated a desire which is like maybe at the one of the highest levels. Okay, very good. So Tarun, great to share that. Let's acknowledge Tarun, Thank you, sir. and we will Thank you, sir. touch this topic towards the end of the session if it has to be addressed, not now, because we are just Sure, building it sir. up. Sure. Sure, sir. Right. So we are looking at the desire and the analysis of a desire. Correct. तो नंबर 1, जैसे ही आपकी कोई इच्छा आती है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कैन यू पुट दैट इन वर्ड्स सो दैट यू आर वेरी क्लियर व्हाट इज द एक्चुअल डिजायर. तो उसको आप लिखिए सबसे पहले बहुत क्लियरली. अगर आप उस पर लिखेंगे तो क्लैरिटी आएगी कि हाँ ये डिजायर है. नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सपोज ए डिजायर इज देयर कि मुझे गाड़ी खरीदनी है. ठीक है. अब गाड़ी खरीदनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर डिजायर हैज टू बी फर्स्ट क्वालिफाइड इनटू वेदर इट इज ए नीड और ए वांट और ए डिजायर. देयर इज ए डिफरेंस. डिजायर तो हो सकती है आपकी है, लेकिन क्या ये नीड है, क्या ये वांट है? राइट. तो नीड है, नीड फॉर सर्वाइवल. तो अगर सर्वाइवल की नीड है, रोटी कपड़ा और मकान है, तब तो उससे पूछने की जरूरत नहीं है. इट इज ए एस्टैब्लिश्ड नीड दैट यू नीड टू डू दैट. तो हैविंग ए जॉब, अर्निंग इनकम, having a good place to live, comfortable place to live. I'm not saying a luxurious one, but a comfortable place to live for your family. These are the basic needs, right? So there is no question about it. ये तो आपको पूरा करना ही है. Everybody aligned? रोटी कपड़ा और मकान, basic needs have to be fulfilled. Now we are looking at a level where we talk of कि हाँ भाई एक आज की डे में कंफर्ट के लेवल पे आप बोल सकते हो गाड़ी एक नेसेसिटी है. Yes, okay, agree. But if it's a family of 3, husband, wife, and a child, maybe a small child, school going kid, right? What is the need of that family? उस हस्बैंड की या हेड ऑफ द फैमिली की, फादर की क्या नीड होगी कि हाँ भाई मैं अपनी वाइफ और बच्चे के साथ हम तीनों आराम से गाड़ी में घूम सकें. दैट इज द नीड. तो पॉसिबली ही विल टेक ए, कौन सी गाड़ी खरीदेगा? एनीबडी, एनी गेसेस? Sir, depends on his financial situation. ठीक है, दैट्स फाइन. बट इन जनरल इफ देयर आर 3 people obviously and he is in a job, you can say, scenario, and he wants to have a, or maybe he had a 2-wheeler, now he wants to move to a 4-wheeler kind of a stuff. ठीक है. तो वो कहाँ से आ रहा है और उसी हिसाब से वो आगे बढ़ेगा. तो मे बी ए वैगनआर और ए सेंट्रो और ए डिजायर एट द मोस्ट, दैट विल सफाइस. करेक्ट. बट अगर वो, अब सिचुएशन वही है, अब वो फादर का रोल नहीं प्ले कर रहा है या हस्बैंड का रोल प्ले नहीं कर रहा है. ही इज ए एमडी ऑफ ए कंपनी और ए, यू कैन से, बिजनेस टाइकून, एंड ही वांट्स टू शो इट टू हिज बिजनेस. मीटिंग्स होती हैं, तो बिजनेस मीटिंग्स में उसको अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने क्लाइंट्स को, सबको दिखाना है. तो पॉसिबली उसकी नीड थोड़ी सी ज़्यादा है. नाउ ही माइट बाय ए BMW और ए Mercedes. Possible? Yes, possible. Now if that gentleman has become the richest man in India or the richest man in the country, in the world, कौन सी गाड़ी खरीदेगा? Now that vehicle has to match with his private island and a private aircraft that he already has. Yes, so possibly he will buy a absolutely high-end model of a luxury car. Clear है? अब उसकी वो नीड है, हमको लगेगा वो लग्जरी है, लेकिन उसके लिए वो नीड है, उसकी नीड बन गई है. तो हर एक को अपनी नीड खुद ही डिसाइड करनी है.
सर्वाइवल स्टेट पे है या लग्जरी लाइफस्टाइल पे है, क्या है, एंड डिपेंडिंग ऑन द नीड ही विल बाय द कार। एवरीबडी क्लियर? तो डिजायर गाड़ी की है, लेकिन हर एक लेवल पे हर एक अलग अलग गाड़ियां ले सकते हैं, सिचुएशन डिफरेंट होने से। एवरीबडी ओके विद दैट? सेम विथ हाउस, सेम विथ एनी मटेरियल पोजेशन इन द आउटसाइड वर्ल्ड। एवरीबडी क्लियर? यस, यस और नो? एग्रीड? ऑलराइट। तो अब हमने देखा, अब कोई गाड़ी खरीदना चाह रहा है अपने पड़ोसी को देख के या अपने किसी रिश्तेदार को देख के कि उसने BMW खरीद ली, अब मेरे को कम से कम उससे 2 लाख और डाल के जो गाड़ी आएगी वो खरीदूंगा। तो नाउ अब कौन खरीद रहा है गाड़ी? डिजायर अभी भी गाड़ी खरीदने की है, लेकिन कौन खरीद रहा है गाड़ी? ए जेलस रिलेटिव और ए जेलस नीबर इज बाइंग ए कार। So once you write down what is the desire and why do you want to fulfill it, it will be very clear to you whether you really want to buy it, need है, या एक इमेजिनेशन और एक फैंसी को और एक अपनी किसी, आप समझ रहे हो, किसी एक अनफुलफिल्ड इमोशन को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो। एंड व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू अंडरस्टैंड इज, अगर आप आधे अधूरे हो, अगर आप अपने आप को आधा अधूरा समझते हो, which means I am not good enough, I have to prove my worth to the society or to my relative or to my neighbor, तो वो कैसे करोगे? तो आप इस तरीके से करोगे, मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी से बड़ी होनी चाहिए, मेरा घर उसके घर से बड़ा होना चाहिए। हाँ, जैसे पहले कह रहा था ना, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे? हाँ, वही सिंड्रोम चल रहा है, राइट? तो अगर ये आप डिस्टिंग्विश कर लोगे, देन you will understand exact need of the desire and also whether you need to fulfill it or not। क्योंकि अगर आप जेलस हो तो आपको अपनी जेलसी का इलाज करना है। गाड़ी बड़ी खरीदने से जेलसी खत्म नहीं होगी, उससे कोई फुलफिलमेंट नहीं होगी, बल्कि ईगो और अनफुलफिल्ड हो जाएगा, क्योंकि आप और तरीके ढूंढ रहे हैं ईगो को और स्ट्रांग बनाने के लिए। जेलसी इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ईगो, राइट? तो डिजायर को फुलफिल करने से अगर आपका ईगो ट्रिगर हो रहा है, इट विल नेवर गिव यू फुलफिलमेंट। तो बाहर की कोई चीज अचीव करके आप जो फुलफिलमेंट करना चाह रहे हो डिजायर की, उससे आप फुलफिल्ड नहीं होंगे, आप आधे अधूरे ही रहेंगे। कोई भी इच्छा पूरी होने के साथ साथ आपको पूर्ण नहीं कर सकती। इट इज लाइक, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। ए मैन थिंक्स ही इज हाफ, हाफ मतलब आधा अधूरा, अनफुलफिल्ड, अपूर्ण, करेक्ट? तो लेट अस इक्वेट दैट टू ही इज हाफ एप्पल, आधा एप्पल है। अब वो किसको ढूंढ रहा है? वो ऐसे एक अनदर हाफ पार्टनर को ढूंढ रहा है जो कि आधा एप्पल हो, ताकि दोनों हाफ मिलके पूर्ण एप्पल बन जाएं। तो ए हाफ एप्पल इज लुकिंग फॉर अनदर हाफ एप्पल सो दैट दे बिकम वन होल एप्पल। दैट इज हाउ वी लुक फॉर पार्टनर्स, मैरिजेस, है ना? अब होता क्या है, आप हाफ एप्पल हो, आपको मिलते हैं हाफ ऑरेंज, वो भी यही सोच रहे हैं। हाफ ऑरेंज क्या सोच रहे हैं? मेरे को दूसरा हाफ ऑरेंज मिल जाए तो मेरी लाइफ पूरी फुल ऑरेंज की हो जाएगी एंड इट विल बी ग्रेट पैराडाइज। दिस इज हाउ वी गेट मैरिड, दिस इज हाउ वी लुक फॉर पार्टनर्स। अब होता क्या है, हाफ एप्पल हाफ ऑरेंज से मिला, अब क्या हो रहा है? हाफ एप्पल हाफ ऑरेंज को एप्पल बनाने में लगा हुआ है ताकि उसकी जिंदगी फुलफिल हो जाए। और हाफ ऑरेंज क्या चाह रहे हैं? वो हाफ एप्पल हाफ ऑरेंज हो जाए ताकि उसका ऑरेंज का फुलफिलमेंट पूरा हो जाए। होगा क्या? ना पूरा ऑरेंज बनेगा ना पूरा एप्पल बनेगा, और थोड़े दिनों में दोनों का टेस्ट खराब हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो सोल्यूशन क्या है? इसमें आप जितने मर्जी पार्टनर्स चेंज कर लो, आप हाफ एप्पल और हाफ ऑरेंज ही बने रहोगे। आप कभी भी पूर्ण नहीं होंगे, क्योंकि आप पूर्णता के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हो रहे हो। पहले मैं वस्तु की बात कर रहा था, अभी मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। बाहर की दुनिया में यही दोनों है कि नहीं?
या तो वस्तु है या व्यक्ति है, हम ये ऐसे ही कर रहे हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? द होल सफरिंग एंड मिजरी जो आ रही है, दैट इज कमिंग फ्रॉम ए रॉन्ग नोशन दैट आई एम हाफ, आई एम इनकम्प्लीट। व्हाट इज द ट्रूथ? व्हाट इज द ट्रूथ? The truth is, I am whole, I am complete, I am perfect. I don't need anybody else to complete me. मैं पूरा एप्पल हूँ already. Aham Brahmasmi. No, hold on. First, stick to the example. I understand, Tarun, what you're trying to say. So first, you need to understand, I am a whole apple. मैं whole हूँ, complete हूँ, perfect हूँ, पूरा एप्पल हूँ. मेरे को और पूर्ण होने की जरूरत नहीं है. I am whole, I am complete, I am perfect का मतलब क्या है? Nothing is lacking. Nothing can be added. Nothing can be taken out. Right? Praveen ji, Nivedita ji, I hope you are connecting. तो अगर मैं पूर्ण हूं तो मेरे को किसी और चीज की, किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो मुझे पूरा करेगा. नाउ आई कैन लुक फॉर ए पार्टनर हु मे बी ऑरेंज और हु कुड बी व्हाटएवर, तरबूज हो, खरबूज हो, जो मर्जी हो. वी कैन सेलिब्रेट अवर होलनेस एंड कंप्लीटनेस विथ ईच अदर without changing the other person. I accept myself the way I am. I accept the other person the way they are. And together we can live a very, very fulfilled life because I am fulfilled at my core. That comes from the thought that, yes, I am divine. What Tarunji just said, Aham Brahmasmi. मैं कंप्लीट हूँ, मैं डिवाइन हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, किसी भी तरीके से अपूर्ण नहीं हूँ. तो मुझे किसी डिजायर की जरूरत नहीं है. किस चीज की? बाहर की दुनिया में वस्तु, व्यक्ति, कोई भी चीज, ऐसी चीज मेरे पास नहीं जरूरत है मुझे जो मुझे पूरा करे. क्यों? मैं ऑलरेडी पूर्ण हूँ. नाउ इफ आई एम कंप्लीट, I can have any desire I want and I can fulfill it without any expectation of being fulfilled. क्योंकि fulfilled मैं already हूँ. I am already happy, I am peaceful, I am joyful. Now I can have any desire for anything, any person or anything in the outside world and enjoy my life completely. Getting the concept of desire? So desire has to be from the space of completeness, not from a space of lack. Number one. Yes, everybody aligned? Yes, Tarun, you raise your hand. Please go ahead. Sorry, वो पहले का था, डाउन करना भूल गया. Please continue. Okay, that's fine. So yes, Vijay ji, go ahead. शशिधर जी, ये बात तो समझ में आई, but what if somebody is not healthy? If somebody is not Healthy. Somebody is not healthy. हाँ. Okay. Yeah. So his desire is to stay healthy or become healthy. Correct. So how will he get that feeling of So being first complete? we need to understand health का मतलब क्या है. Health का मतलब है, perfect health का मतलब क्या है कि basically I am at a state of wellness, not a state of illness. है ना? तो हम wellness इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए, हमको illness इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाना. शरीर में कोई अगर बीमारी आ गई है, कहां से आई है? Where is the source? You must have heard about psychosomatic diseases. In fact, whatever is happening in your body, there has to be an intervention in that level of mind. Without the mind intervening or interfering, then nothing can happen in the body. Yes or no? चाहे वो autoimmune disease हो या फिर वो psychosomatic disease हो, mind has a direct influence upon the things in the situation that are happening in the body, creating illness or wellness. नहीं, अगर कोई किसी को लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है ऑलरेडी, वो भी मैनिफेस्ट वहीं से आ रहे हैं. आया कहाँ से? शुरू से कहाँ से आया? अब आ तो गया ना. अभी व्हाट नेक्स्ट टू दैट? देखिए, बीमारी आ चुकी है तो मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा और कुछ नहीं है. बट यस, व्हाट वी कैन डू इज अलोंग विद दैट वी कैन डू स्पिरिचुअल हीलिंग. इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट यस, यू आर अवेयर ऑफ इट दैट healing of your karmas, healing of your pranamaya kosh and manomaya kosh, which are very, very important and directly connected to your annamaya kosh, which is the physical body. Correct? तो ग्रॉस बॉडी में जो हो रहा है वो सटल बॉडी से आ रहा है. तो आपको सटल बॉडी को हील करना पड़ेगा.
फिजिकल बॉडी के लिए तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, और होलिस्टिक ट्रीटमेंट अगर आप लेंगे, विच कुड बी रेकी हीलिंग और वैदिक हीलिंग और एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग दैट यू डू, एनएलपी हीलिंग, उससे होगा ये कि आपका माइंड, विच मीन्स मनोमय कोश, प्राणमय कोश एंड आनंदमय कोश, ऑल द थ्री विल गेट हील्ड, एंड बॉडी में जो बीमारी आ चुकी है वो रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी, एंड धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी, क्योंकि इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम द माइंड। तो माइंड, मनोमय कोश और प्राणमय कोश को हील करना जरूरी है। दैट इज हाउ यू कैन हील योर बॉडी। बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, बॉडी अपने आप में वेलनेस के स्टेट में ही रहती है, कुछ ना कुछ उसमें वायरसेस घुस गए हैं आपके माइंड के लेवल पे और प्राणमय कोश के लेवल पे, जिसकी वजह से बॉडी में ये बीमारी आई है। तो उस पैटर्न को तोड़ना होगा, उस पैटर्न को रिवर्स करना होगा, और साथ में मेडिकल हीलिंग करनी पड़ेगी, तो कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक होती हैं। यस, एंड of course your spiritual sadhana will take you there along with the spiritual healing, which means aapka pranayam, meditation, yoga, all these things are very very important for a perfect lifestyle. Once you are treated of the disease, you can recover fast with the lifestyle of illness. मतलब illness से निकल के wellness में आने के लिए lifestyle change करना पड़ेगा। तो सुबह 10 बजे उठने से नहीं चलेगा, सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, योगा करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, यस, दिव्य ज्ञान लो, आत्मज्ञान लो, स्पिरिचुअल जर्नी पे चलो, एंड ऑफ कोर्स go to a healer and get spiritual healing done. That is the easiest option done, right? But yes, you yourself have to change your lifestyle. So I hope I have answered you, Vijay ji, and that also takes care of kahan gaye hamare naye guest, yeah, Prajay. So Prajay will be happy to hear that, how we can get free from the illness in his body. बीमारी अगर आ चुकी है तब तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी ही पड़ेगी, लेकिन जो प्रॉपर हीलर्स हैं और प्रॉपर हीलिंग करते हैं तो माइंड लेवल पे ही, प्राणमय कोश में और मनोमय कोश में ही आप हीलिंग कर सकते हैं, तो बॉडी में बीमारी आएगी ही नहीं। एंड ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दैट, यस, दोस हु आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ एंड ब्रेथ, प्रवीण जी, निवेदिता जी, यस, so all of us know that, and that's what we do in the practice. So spiritual healing, pranayama, meditation and yoga and all these will definitely help you to reverse any physical condition in your body, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज हो, चाहे वो क्रोनिक डिजीज हो, एक्यूट conditions हो, heart attack, cancer, stroke, paralysis, all these have been reversed. Let me tell you that. Yeah. Okay, let's acknowledge Vijay ji and just moving on. Anybody else who has any question? So basic desire clear हुआ सबको? Yes. Okay. Now let us look at डिजायर हमने देख लिया, अब हमको आना है कि इसको मैनिफेस्ट कैसे करें। करेक्ट, एनालिसिस तो कर ली डिजायर की, अब हमको उसको मैनिफेस्ट भी करना है। तो सबसे पहले हमको देखना है हमारी जो भी इच्छा है, डिजायर, उसको जब हम लिखेंगे तो उसमें से अगर आप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिजायर की होती है, उसके साथ बहुत अटैचमेंट होती है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट आती है ना, क्योंकि एक तो मेरी लाइफ है, तो मेरी लाइफ में मेरे को चाहिए, तो शायद वो मेरे बेटे से हो, मेरी वाइफ से हो, मेरे पेरेंट्स से हो, किसी के साथ से भी मेरे को अगर इच्छाएं तो इन्हीं के साथ होंगी ना, किसी सड़क पर चलने वाले रिक्शे वाले से थोड़ी ना हम कोई डिजायर रखते हैं। तो वी आर हैविंग डिजायर्स फ्रॉम द इंपॉर्टेंट पीपल इन अवर लाइफ, सो वी हैव अ लॉट ऑफ अटैचमेंट। द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज डिजायर को अटैचमेंट, मतलब अटैचमेंट को डिजायर से अलग करके देखना है। दैट मीन्स डिजायर माइनस अटैचमेंट, and that will come to the pure form of desire, which is called intention. Everybody has listened to this? सबने सुना intention? Intention is the purest form of desire without the attachment. तो फॉर्मूला क्या हुआ? Desire minus attachment is equal to intention. Clear है? Yes. And intention along with attention is equal to manifestation. I'll repeat that for your understanding. Desire minus attachment is intention, and intention plus attention. Attention means what? Your focus. Now attention will mean everything that you are doing to manifest that intention is equal to manifestation. Correct? So intention transforms a situation, attention energizes that
intention into manifestation. अब attention पे क्या करेंगे हम? सबसे पहले manifestation के जो tools हैं, creation के tools हैं, क्या हैं? Thought, words and deeds. Yes, कर्मा आएगा ना? तो attention means all the three. आप first you focus on your thought. Pay full attention to the thought. Your intention should be there in your thoughts for the 24 hours a day. That means that is the primary focus. Intention आपने लिख लिया, उस पे आपको फोकस करना है. Thoughts. Visualize it. Imagine it. तो आपने थॉट बनाया, उसको विजुअलाइज किया, उसको इमेजिन किया, उसको रियलिस्टिक होना चाहिए. यस, ऑल दिस हैज टू हैपन. तो आपने थॉट में लिखा, उसके बाद थॉट को वर्ड्स में लिखा, और उस वर्ड को फिर आप एक्शन में ला रहे हो. तो एक्शन में लाओगे तो कैसे करोगे? एक्शन के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपने जो डिजायर बनाई है, इट शुड नॉट बी ए सेल्फिश डिजायर. इट हैज टू इंक्लूड एज मेनी people you can think of who would be impacted by that intention. क्योंकि you have to understand, आपकी एक intention कैसे fulfill होगी? आपने जो भी thought भेजा वो कहाँ गया? It goes into the universe, right? यूनिवर्स का एक ही लैंग्वेज है, यूनिवर्स और गॉड एक ही बात है. तो आपने कोई इंटेंशन भेजी, इट गोज टू द यूनिवर्स, इट गेट्स ए तथास्तु फ्रॉम द यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स को एक ही लैंग्वेज आता है, तथास्तु. वट एवर यू से, यूनिवर्स सेज तथास्तु, and it comes back and manifests in your life. So thought becomes things. How many of you know law of attraction? Law of attraction सुना हुआ है सबने? हाँ, तो उसका बेसिक रूल क्या है? Thought becomes things. तो आइडिया यही है ना? Intention goes, gets a tathastu from the universe, and it will come back and manifest in your life in the form of different combinations of life events. वो आ जाएगा. और वो intention कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड नॉट बी ए वेरी वेरी सेल्फिश वन, कि मेरे को फायदा हो जाए बाकी सब मर जाएं. वो थॉट नहीं मैनिफेस्ट होगी. आपको कैसी थॉट चाहिए? कि मेरा अच्छा हो और बाकी लोगों का भी अच्छा हो. मेरी ये इंटेंशन फुलफिल हो जाए विथ गुड रिजल्ट्स टू एवरीबडी हु इज अफेक्टेड बाय दिस इंटेंशन. तो अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ, मुझे कैंपस इंटरव्यू में मेरे को जॉब मिल जाए, या सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का पहले एक सबसे बड़ा 4 साल की मेहनत इसी में होती थी कि प्लेसमेंट कहाँ होगी. आजकल भी यही है. तो मेरी इंटेंशन है कि मेरे को, अगर मैं मान लीजिए मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, कैंपस इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो आई वांट ए गुड जॉब विद अ गुड पैकेज. बट डज दैट मीन दैट ऑल द अदर्स शुड फेल? अगर मैं ये चाह रहा हूँ उसकी टांग टूट जाए, वो कैंपस इंटरव्यू में ना आए, और वो किसी तरीके से मेरे से खुश होकर मेरे को ले लें, बाकी दुनिया गए भागे, मेरे को परवाह ही नहीं उसकी, तो फिर ये इंटेंशन नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत सेल्फिश है. एंड इट इज़ ओनली कंसर्न्ड अबाउट योर वेलफेयर, नॉट विद अदर्स. तो आपकी इंटेंशन को थोड़ा सा उसका बैंडविड्थ बढ़ाना पड़ेगा. इट शुड इंक्लूड एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. मेकिंग सेंस? एवरीबडी क्लियर ऑन दिस, राइट? सेकेंड थिंग, इट इज नॉट शशीज विल बी डन. वो मेरी इंटेंशन नहीं है. अब वो किसकी इंटेंशन होगी? इंटेंशन मैंने भेजी, लेकिन रिजल्ट कौन देगा? डिवाइन. सो इट हैज टू बी डिवाइन विल बी डन. जैसे आपकी मर्जी. आप भगवान को बोले, भगवान जी मुझे ये चाहिए, अगर क्रूड लैंग्वेज में बोलें, मुझे ये चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांट, थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेटफुल. आगे आपकी मर्जी. मोस्ट लाइकली यू विल गेट ए तथास्तु एंड इट विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, प्रोवाइडेड द थर्ड एस्पेक्ट इज क्लियर. आपकी तरफ से एक्शन गया, वहां से तथास्तु आया, टाइम डिसाइड होगा बेस्ड ऑन योर डिजर्विंग साइकिल. व्हेन यू डिजर्व इट, the universe will give it to you. So your quality of karma will decide whether you are going to get it or not. That is the way you manifest. Is that clear? Or anybody needs any explanation? Yes, So the element of action is very important. Yes, obviously. Intention के साथ साथ आप, मैंने पहले बोल रहा हूँ, थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन तो होगा ही होगा. आप थॉट भेज रहे हो, आप वर्ड्स में उसको, इंटेंशन को भेज रहे हो, तो वो चला गया यूनिवर्स में, पर आपको एक्शन में तो आना ही पड़ेगा ना. आपको तैयार होना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए सच सच के जाना होगा, सब कुछ अच्छे तैयारी करनी होगी, कॉन्फिडेंटली जवाब देने होंगे, वो सब करना ही पड़ेगा. आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपकी एक्सपर्टीज, वो सब काम आएगी. बट ये तो
फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है। एनर्जी वर्ल्ड में क्या हो रहा है? एनर्जी वर्ल्ड में है यू आर ग्रेटफुल, यू आर विशिंग वेल फॉर एवरीबडी, इवन द ऑर्गेनाइजेशन जो आपको हायर कर रहे हैं उनका भी अच्छा हो। ये ना हो आपको एम्प्लॉय बना लिया, उनका पट्टा बैठ गया, वैसे भी नहीं होना चाहिए। तो दे शुड ग्रो, यू शुड ग्रो, एवरीबडी शुड ग्रो, देन यूनिवर्स विल से ओके गुड 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 इंटेंशन, let us manifest it, kind of stuff, it will come naturally. तो कहीं भी नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी को आपने आगे नहीं बढ़ाना है, अपने लिए, औरों के लिए, किसी के लिए भी। क्लियर है? सो इंटेंशन एंड अटेंशन इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन, दैट इज द फॉर्मूला। यस निवेदिता जी, आपने कुछ बोलना चाहा था? नो, दैट्स फाइन। ओके, एनीबडी हु वांट्स टू शेयर? इफ समथिंग इज नॉट क्लियर यू शुड रेज योर हैंड। राहिल, तरुण, प्रजय जी, वीना जी, you haven't said anything. Anup ji, welcome. If you're coming here for the first time, if you feel any questions to be asked, please raise your hand. And Priyanka ji, yes. What we have shared till now, anybody who has any doubts, anything that you want to say? Apurva ji, welcome. कुछ कहना चाह रहे हैं आप? Okay. Right. Yes, Tarun, go ahead. So when we are talking about intentions, the purest form to manifest that is the early morning hours when you just woke up from your sleep. Yes. And I would strongly suggest or recommend, or people who really want to get into the spiritual journey and experience that magic in their life, the power of divine, start practicing paying early morning gratitude to the universe. Universe hears very clearly. Yes. Very good. And बहुत बढ़िया. And yeah, go ahead, good. and you have to repeat every day same things. Yes. Very good. That is why I So this often is say that intention has to be written down so that you are not confused कि मैंने कल क्या मांगा था, भूल गए। कल हेल्थ मांगी, आज वेल्थ मांगी, परसों रिलेशनशिप मांगी, फिर मैरिज मांगी, तो नहीं चलेगा ना। right. चार So this is इंटेंशंस रख सकते हो, चारों को आपको रोज करना है। रोज करना. That's it. Yes. So आपकी this is the जितनी only इंटेंशंस mantra हो, which जितने डिजायर्स हो, उतनी इंटेंशंस बनाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। But you should focus on each intention every day, and the best time, as Tarun just shared, is in the morning. Why in the morning? Anybody? Technical reason? Science है वैसे ये. It's not a belief. yes, It is a science. सुबह सुबह क्या होता है? हाँ. the clear, the less amount of noise, all the energies are in the peace. रात को सो रही होती है 90% लोग, या 80% लोग, 20% जो काम भी कर रहे हैं वो भी सोने वाले मोड में होते हैं. And then all the negative energies are already on the lower state, and sun is rising, it spreading the positive energy. And that is the best time to connect with the universe, and you will receive directly the power of that to you. This is what I've experienced in the last 1 year. Yes. And I was one of the crying baby when I came over here. And today I'm talking about a completely different things. And I can see the happiness of Shashi sir, the magic he has given in my life. Wonderful, wonderful, Tarun. Great, great to hear from you. And absolutely perfect. सुबह सुबह ट्रैफिक कम होता है ना, सुबह सुबह आप फिजिकली भी देखते होंगे। अगर सुबह आपको गाजियाबाद से, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ इसलिए, गाजियाबाद से अगर आपको एयरपोर्ट में जाना है तो 40 मिनट में पहुंच जाओगे आप। दिन में जाना तो 3 घंटे भी लग सकते हैं, बारिश आ गई तो शायद 6 घंटे भी लगेंगे। हाँ, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचने का टाइम बढ़ जाएगा। सुबह सुबह जब आप उठते हो, स्पेशली अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो, तो उस समय क्या हो रहा है? इट इज़ प्योर सात्विक टाइम। सारे तामसिक और राजसिक अपने भोग विलास करके सो रहे होते हैं। हाँ, सात्विक लोग उठे हुए होते हैं, विच मीन्स द वाइब्रेशन इज एब्सोल्युटली प्योर. Your intentions will go boom like a rocket. It will go to the universe, get it tathastu, come back fast, and enter the blessings into your subconscious mind. Subconscious mind is the, you can say, like a blotting paper.
Absolutely clean in the morning. सुबह सुबह आप उठते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल साफ होता है। उस समय ये सब इंटेंशंस अगर डालोगे आप, तो सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड से वो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी चला जाता है। Yes, that is why we do all the spiritual sadhana right in the morning. Whether it is pranayam, yoga, meditation, affirmation, healing, all these are things which should be done in the morning. And of course, as Varun said, morning rising sun, absolutely brilliant, wonderful energy. So all these are indicators that how you can manifest your desires effectively and very, very powerfully in your life. Yes? Right. So let's acknowledge Tarunji. Yes, Nivedita ji, go ahead. सर जो मॉर्निंग में हम लोग बोलते हैं ना सर, ग्रेटिट्यूड फर्स्ट इन द मॉर्निंग, what is the difference between gratitude and the intention that we repeat in the morning? So see, when you are gratitude anyway is important for fulfillment of the intention, because you're already thanking the God in advance. God, I'm saying in the quote unquote God that we normally understand, correct? तो उसमें आप कुछ भी अगर मांग रहे हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, तो already you are thanking the divine for having given you the result. So that is the kind of faith and belief you have in the divine. तो भगवान को अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ तथास्तु बोलना, जो उनका यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो इट इज ए, यू कैन से, ऑटो मोड ऑफ गेटिंग तथास्तु from the divine, right? And the divine is not somebody who is in the universe, the divine is somebody who is within you also, correct? हाँ, तो ये समझना है कि भगवान सिर्फ ऊपर ही नहीं है, वो हर जगह है, तो आपके अंदर भी है। यस, ऑल राइट, वेरी गुड निवेदिता जी। तो डिड आई आंसर यू? yes sir. So I just one more clarification that while saying gratitude, like if somebody's intention is to get a good health, so then they will say I give thanks for having a good health, so Yeah. I am healthy, I give thanks. So I am healthy. so Feeling that happy, is how giving it should thanks. go. Yeah, so that should go like that. So whatever the intention is, that already you have it, and then Yes, you yes. Attention, yeah, that is a very good point that you raised. Attention is always in the present, huh? Intention is always in the present. It can never be in the future. Energy level पे future और past है ही नहीं. See, existence में सिर्फ present है. Right now we are all present in the present, right? We are not present in the past, or we are not present in the future. We are present right now, right here. So intention always is in the present continuous tense or present tense. आपको wordings बहुत ध्यान से लिखने होंगे. Anybody who has any confusion on that can contact me one-to-one or फिर Amit ji. So he is also an expert in the manifestations, miracle manifestations. Yes. So since Amit ji is here, I will take the opportunity to hear something from Amit ji. Amit ji, over to you. Anything you want to share regarding the manifestation? We have talked about intention plus attention is equal to manifestation. Yeah. So anything you want to share? No, I think largely you've covered everything, but precisely there'll be a little bit of disconnect, but then there's a little bit of carry forward also that I will talk about in the next 2 minutes. So when we talk about manifestation, what my personal experience has been, though I'm not saying that my experience is more or larger, but I somehow, a lot of people would have experienced certain miracles, certain desires getting fulfilled, and perhaps we thought that we don't know the reason, but it worked. I also looked back after few desires got fulfilled. Then I looked back from a spiritual lens. Then yes, these principles applied wonderfully. That yes, I think I was unknowingly applying these principles, and those desires got manifested. So, in a very crystallized form, I found 3 pillars or 3 steps, which I also call as 3-pillar miracle manifestation theory. Wherein the first thing, which sir also talked about, visualization or creative visualization, creating a visual of the situation that we want. So a lot of people know this already. So I call it consider it is done. First step का नाम है consider it is done, wherein we start operating also from the same zone.
that as if that thing has already happened. And before that, we create a visual of that very strongly. In fact, I have a long video which is about 40 minutes, which talks about in length that how can we apply these three pillars. So first is consider it is done, which automatically also includes creative visualization. The other point that he was also talking about 10 minutes ago was that any desire will not get fulfilled if this is going to be harmful for any other creation or human being. So there is a crisp word which I call as inclusion of potential losers. So whatever desires that we have, there is a technique that smartly, how can we identify people who could be our competitors and start including them also in our prayer instead of. So how do we do this? I mean, this takes a lot of time to explain. Maybe we can have another session. And the third and the last, which is not necessarily in the time order of time is last, but it also applies right from the beginning that we just talked about, is gratitude. But what is more important is more gratitude and less prayers. So what happens? People 80% of the time will pray that ki mujhe ye mil jaye, I wish I get that, I wish get that, I wish get that. But about, I think all of us, yes, we all know about gratitude in this room right now. But I think 90%, 80% people on the planet do not practice this, though they know, okay, padha tha kabhi, which is fine. So I think उसमें भी prayer की quantity कम करनी है and gratitude की बढ़ानी है. So it has happened very consciously. So do all the three things. Consider it is done is the first step. Number 2, inclusion of potential losers. And number 3, more gratitude, less prayers. Yeah. Absolutely. Absolutely. Perfect. Wonderful. Wonderful, Amitji. Thank you. यही से सीखा है सब. Yeah. But then to apply that and make a formula out of it is always something very special. Yeah. And that I always connect with you. You have this knack of, acronyms and, If anybody has a question on what I said, I'll be very happy to answer. We have a minute. Anybody who wants to connect one-to-one with me or Amitji for any intention, for any desire that you have, for which you are not having clarity, please feel free to do that. Yes. Okay, round of applause for Amitji. Yeah, all of you. Great. All of you. Yes, Tarun, you have raised your hand since a long time. Yeah, go ahead. Tarun, are you there? We just reached the scheduled time. So if you want to share something, please feel free to do that. And meanwhile, let me check with people who are here and have not shared anything today. So Parveen ji, anything you want to share? Rahil and Veena ji, Priyanka K. Yeah, Priyanka ji. Yes, Tarun, go ahead. So as there are many questions related to health today has been asked. So I just wanted to put some light over there also. It has been a very beautiful discussion which was happening before Miji regarding that health. I want to say that manifest like that. Thank you for blessing me with good health. These words will make you a lot of difference when you have to overcome your medical issues. And these are the, even if you feel little tired, little under stress of some disease, but these words will start creating the magic and you will start experiencing within 3 weeks. And if you can add on to this is like healing modality, if any of the, that will be a value addition and you will find the recovery much faster. You might not be able to imagine right now how that healing works, but when you start experiencing, you will start understanding the magic of it. Absolutely perfect. So, wonderful, wonderful. Great. Thank you, sir. Thank you for giving the opportunity to speak. Yes. Yes. Anybody else who wants to share? Veena ji, you want to share something? Yes, go ahead. आप म्यूट पे हैं वीना जी, आप म्यूट पे हैं. Unmute yourself and yeah, go ahead. Yeah, नहीं थोड़ा glitch था. So I really enjoyed the session today, and it made me more confident actually. Quite a few things I was aware. And then just adding, जैसे आपने बोला prayer and people, हम भी बचपन से ही भगवान जी ये दे दो वो दे दो. But आपकी एक line ने बहुत clear कर दिया, which said that there is no past, there is no future. Everything is now.
So when everything is now, it doesn't make sense to say ye de dena, ye de dena. You say कि thank you for giving me. Yeah, thank you, it's in process. तो उससे बहुत clarity आ गई. I think बस मेरे को एक चीज question I can ask if I can. So a lot of the times I find people like some of them are related, and let's say somebody who's not related also facing lot of health issues. मुझे बहुत लगता है कि मैं उनको मदद करूं या बता सकती हूँ. एक्सेप्टेंस में भी नहीं रहते और शायद बता भी नहीं पाती. तो आप is it okay to pray on a regular basis for somebody? My only risk is that if something happens in their health, and they are not aware, so I don't want to take that chance. You know what I'm saying? So is it okay to pray? Are you a healer, Veena-ji? Let me check with that. Are you a healer? So I am a trained healer. Are you practicing it? I know the process. I know the process, but I like to do some generic thing. तो मैं generic करती रहती हूँ. मैं बहुत focused नहीं करती हूँ. क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लगता है कि वो risky भी लगता है focused करना. अगर आप spiritual healer हो तो इसमें कोई risk नहीं है. Number 1, because you are not a healer. Healer is the divine. ह्यूमन बीइंग में इतनी पावर नहीं है कि किसी को हील कर सके, चाहे वो वर्ल्ड का बेस्ट सर्जन ही क्यों ना हो. हीलिंग डिवाइन करता है. Even the greatest surgeon will only make the conditions in such a way so that the body can heal itself with the universal intelligence flowing through it. Yes. So heal कौन कर रहा है? Divine. Is that clear for everybody? Okay, Correct? sorry. Yes, Now got it. let me ask you a very question because health की काफी issues आए हैं, तो मैं एक general question पूछ रहा हूँ आपसे. आप अपने disease को heal नहीं कर सकते हैं as on date right now. But if the divine wants, can he heal you in 1 second or 1 night? Can he do that? Do we have that belief? Yes? No, I have that belief 100%. Yes. But I need to create the intention. Hold on. I should not get a shock if something happens. Let me tell you one thing. First listen to what I'm trying to say, correct? Sorry. अगर डिवाइन हील कर रहा है और डिवाइन में हीलिंग पावर्स हैं कि आपके किसी भी हेल्थ इश्यू को, चाहे वो कैंसर हो, ब्रेन स्ट्रोक हो या जो मर्जी हो, इन ओवरनाइट, आई विल से 1 सेकेंड, अगर डिवाइन चाहेगा तो 1 सेकेंड में आपकी बॉडी हील होगी. मिरेकल हीलिंग होते हैं. I have experienced it. All my healers have experienced it, and I've been doing this for the last 25 years. Correct? Now, what you have to understand is, if you are doing the techniques correctly, that is the only one particular thing that you need to do. Rest is taken care by the divine. Whatever is the process. Spiritual healing के जो भी process हैं, आप सिर्फ अगर techniques को follow कर रहे हैं, बाकी divine कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो. कर्तापन है ही नहीं. कर्तापन नहीं है तो ये निष्काम कर्म है. निष्काम कर्म में हमेशा डिवाइन का काम होता है. डिवाइन इज द कर्ता. ही इज द वन हु इज हीलिंग. आप सिर्फ टेक्निक्स कर रहे हो. डोंट क्लेम टू बी ए हीलर. देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ risking anything or causing any ill health or causing any kind of bad effects. Yes. And for the people who are actually suffering from any disease, let me tell you that अगर डिवाइन चाहेंगे तो आपकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी विद perfect medical healing that you will receive. Medical healing तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि बीमारी शरीर में आ चुकी है. Yes, but then along with the divine spiritual healing, you can recover faster, and it will be rooted out from your subconscious mind, the imprints of that disease, which is the root cause of all disease, and you will regain the good health very easily. इसमें कोई डाउट नहीं है. Yes, so put all your fears, remove all the fears, and have full faith in the divine. And surrender to the divine spiritual energy, the divine healing energy, and it will heal you instantaneously. So I want to put all the doubts at rest for all the healers, whether it is risk. There is absolutely no risk. आप कुछ नहीं कर रहे हो. Unless you are a surgeon and you're doing a surgery, you can do something wrong there. But if you are doing a spiritual healing, आप सिर्फ एनर्जी भेज रहे हो, सिर्फ प्रेयर्स भेज रहे हो, सिर्फ ब्लेसिंग्स भेज रहे हो, बाकी काम डिवाइन कर रहे हैं. So you don't have to worry about it. A healer is only a healer in name. Actually, the healing is done by the divine. He is your healing partner. So have full trust in the divine will take care.
Now, if you have any questions, you can ask. Yes, Binaji. Do you want to say something? तो अगर जैसे किसी के बारे में आपको पता लगता है और the person is unwell, so is it okay to send prayers or even healing without letting them know? How will they receive it? Divine के 800 through करोड़ लोग हैं इस दुनिया में. मैं चाहूं तो 800 करोड़ लोगों को हील कर सकता हूं. कितने लोगों को हीलिंग मिलेगी? जो रिक्वेस्ट करेंगे उनको मिलेगी. जिनको पता ही नहीं है वो कैसे रिसीव करेंगे? मान लीजिए आप सबके घर में मैं एक कुरियर भेज रहा हूं, आप घर पे ही नहीं है, कुरियर वापस आ जाएगा ना मेरे पास? आएगा कि नहीं? रेसिपिएंट होना चाहिए ना वहां पे. ही शुड से ओके, आई रिक्वेस्ट यू फॉर हीलिंग and there is a proper energy exchange for that. Then he will receive that healing and the divine magic will happen. तो आप जिसको भेज रहे हैं पहले तो उनको रिक्वेस्ट करनी है, प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज करना है, तब आपकी एनर्जी को वो रिसीव करेंगे. यस, पहले होता था ना, बिना स्टैम्प के हम एनवेलप भेज देते थे, पक्का इंश्योर करते थे उनको मिल जाता था. बिना स्टैम्प के भेजो तुरंत मिलता था. क्यों? क्योंकि उसको स्टैम्प के चार्जेस देने पड़ते थे. स्टैम्प लगा के भेजो, कभी लूज हो जाता था पार्सल. बिना स्टैम्प के भेजते थे तुरंत पहुंच जाता था. उसको बोल देते थे फिर बाद में जब मिलेंगे तो पैसे वापस कर देना, ये जो भी है. आइडिया इज व्हाट, देयर हैज टू बी एन एनर्जी एक्सचेंज फॉर द पर्सन टू रिसीव दैट पार्सल and you are sending an energy parcel. Look at it that way. The person should be requesting it, he should pay an energy exchange, and then he is the recipient of that healing energy. Otherwise, a qualified healer can send healing to everybody on this planet Earth. Yes or no? Yeah. Yeah. Good. Let's acknowledge Veena ji. All Thank right. you. Very good. Yes, Vijay ji, go ahead. शशिधर जी, मेरा ख्याल वीना जी का ये थॉट प्रोसेस है कि if somebody is not willing to acknowledge or doesn't want healing, but still that person being close to you, you want that person should get healed, you know. Yeah, this How I was do- saying how do you in go? general, but in case the person concerned is your parents or your partner, life partner, husband, wife, or children, you don't have need their permission. These 6 people you can heal without their permission, correct? Because you are already karmically involved with them. Parents के साथ, चलो इन लॉज को भी चलो दे दिया आपको साथ में, तो इन लॉज को भी कर सकते हो, पेरेंट्स को कर सकते हो, राइट? बिकॉज पेरेंट्स अपने हस्बैंड या वाइफ के थ्रू आप इन लॉज के साथ कनेक्टेड हो. लेट मी गिव दैट. बट नॉर्मली इन लॉज को अलग मानते हैं, बट स्टिल जनरल बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, वो भी कर सकते हो. तो ब्रदर सिस्टर्स को भी अगर आप चाहो तो बिना पूछे हीलिंग कर सकते हो. बट इट इज बेटर टू टेल देम आई एम सेंडिंग द हीलिंग, प्लीज बी इन ग्रेटिट्यूड. इतना तो बोल ही सकते हैं ना. अगर आप पैसे नहीं लेना चाह रहे या कुछ और नहीं लेना चाह रहे, दोस्तों के साथ तो पहले मैं बोलता था चलो कॉफी पिला देना, काइंड ऑफ स्टफ, राइट? या कुछ भी, किसी भी तरीके का ग्रेटिट्यूड वापस में रिटर्न मांग लेते थे. बट व्हेन यू आर ए प्रोफेशनल हीलर यू शुड आस्क फॉर एनर्जी एक्सचेंज. देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन इट, क्योंकि ये निष्काम कर्म ही है, चाहे आप उससे एनर्जी एक्सचेंज लो या ना लो. आई एम मेकिंग ए वेरी बोल्ड स्टेटमेंट. क्योंकि निष्काम कर्म क्यों है? क्योंकि कर्तापन है ही नहीं. जिस कर्म में कर्तापन नहीं है वो निष्काम कर्म है. तो हीलिंग में आप कर्ता नहीं हो, डिवाइन करता है. यस, so it is a nishkam karma even if you are taking energy exchange. But then as a rule I have made that whatever energy exchange comes, some percentage of that goes to donation as charity, which is my rule for my conscience or whatever. That is my way of giving it back to the humanity, correct? So but you need to understand, अगर कर्तापन नहीं है तो निष्काम कर्म ही है, वो सकाम नहीं है. So it's perfectly okay to take energy exchange for some healing energy that you are sending to people. Because I met many healers who are very skeptical of taking energy exchange. You cannot do powerful healing अगर आप में वो विश्वास नहीं है तो. So you need to be very, very clear. Yes. All right, we have crossed 12 minutes, so I will have to close the session. Last and final call. Anybody who wants anything to share? What's Nishkam in English? Nishkam is, you can say, without any desires. Kamna means ichha,
So nishkam means without any desire. In fact, it means without any selfish desires. अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो मेरे को कुछ वापस मिलेगा, ये सकाम है, with desire. Correct? So nishkam is without desire. Thank you. Yeah. So either you should be free from that kartapan, or you need to be absolutely selfless. What is a selfless act? Somebody give me an example, since she has touched this topic. Selfless कर्म कैसा होता है? Parenthood. हाँ, Parenthood. parenthood. Okay. Okay. All right. And anybody else who wants to give an example? वैसे parenthood में आप जो बच्चे की देखभाल कर रहे हो, that is fine, but बच्चे के साथ बहुत attachment हो जाती है, हाँ, तो उसमें बहुत सारी कामनाएं हैं. Anyway, I get your point. Parenthood means raising your children. When you're taking care of a newborn baby or a 1-year-old infant, that is absolutely getting up in the middle of the night and serving is a blissful experience rather than a irritation, है ना? तो mother को irritation नहीं होती. Mother is blissful when she is taking care of the child. That is nishkam. Yes, absolutely, out of love. But धीरे धीरे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, खासकर मदर्स को, क्योंकि the child is part of her, right? Okay, good Anupji, I understand what you're trying to say. Anybody else who can give a So you already answered, Shashi Dhar ji, जहाँ पे attachment ना हो and it's out of love. हाँ, तो give me one example. इस जगत में ऐसा कोई है एग्जाम्पल जो दे सकते हो आप अभी? माता पिता की सेवा. वो तो आप रिटर्न कर रहे हो उनको. जरूरी नहीं है तो मतलब किसी ने दिया तो ही आप दें, मतलब आप, इट इज योर विल. Okay, I get that. That is also acceptable. Agreed. Thank you. Anybody else? Anything that you are doing that is for the divine. Okay, like, so this like is the homework for business. everybody. Find out one nishkam कर्म which you can do in this lifetime. I will give you one example. Okay, आप एक आम की गुठली को आप बीज बो रहे हो ताकि एक आम का पेड़ बने. अब आपके जीवन काल में तो वो बनने वाला नहीं है, या ऐसे आपने रोज एक आम की गुठली लेके आप एक पेड़ लगा रहे हो. इस जीवन काल में आपके और आपके परिवार को उससे कुछ नहीं मिलने वाला है. ना आपके उस पेड़ के नीचे आपके बच्चे खेलेंगे, ना आपके पोते खेलेंगे, ना आपको कोई छाया मिलेगी, ना आपको कोई फल मिलेगा. करेक्ट? बट यू आर हैप्पीली डूइंग दैट. दैट इज निष्काम कर्म. कैन यू गेट दैट अंडरस्टैंडिंग? आपको पक्का है कि इसमें से मेरे को कुछ मिलने वाला है ही नहीं. माँ बाप की सेवा में आप बोल सकते हो पुण्य कमा रहे हो. करेक्ट? या आपको कोई उसमें है कि भाई उन्होंने बचपन में मेरे को देखा था इसलिए मैं उनको देख रहा हूँ. कहीं ना कहीं पे ये फीलिंग है कि अटैचमेंट वाली फीलिंग है ना? हर एक को तो नहीं हम देख रहे. वृद्धाश्रम में जाके अगर आप किसी की सेवा कर रहे हो तो बात अलग है. अदरवाइज योर पेरेंट्स आर योर पेरेंट्स, यू आर अटैच्ड टू देम, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, प्यार भी होगा, लेकिन प्यार के साथ अटैचमेंट का तड़का लगा हुआ है. बच्चों के साथ भी यही है, पेरेंट्स के साथ भी यही है ना? तो फैमिली के साथ आप निष्काम कर्म है नहीं बोल सकते, बट आप कोई ऐसा कर्म कर रहे हो जो इस जीवन काल में आपके या आपके फैमिली के लिए कोई भी किसी भी तरीके का फायदा नहीं होगा, उस कर्म को हम निष्काम मान सकते हैं. दैट मीन्स इट इज एब्सोल्युटली free from all the desires. Okay, so good. I think somebody had mentioned nishkam karma, and Nikita ji, good that you asked. So I've clarified it. Yes, anybody else who wants to share? Tarun, you want to share something? Yeah, I want to share Question. something. Hold on. एक करके आते हैं. Tarun ji, yeah, go ahead. Yeah, I have a question. जो भी अभी हमने बोला कि वृद्ध आश्रम में जाके सेवा करो, does that come in the निष्काम भाव, or it comes like again with some कि कोई जा रहा है तो उसके माइंड में कुछ मंशा हो सकती है कि मेरे को, मैं उनकी सेवा करूंगा तो मेरे को कोई आशीर्वाद मिलेगा या कुछ होगा. तो अगर आपको आशीर्वाद चाहिए, आपको पुण्य चाहिए ताकि आपका अगला जन्म अच्छा हो, तो ये पूरा निष्काम नहीं हुआ, बट स्टिल इट इज अ वेरी गुड कर्म. यू कैन गो अहेड. एटलीस्ट अटैचमेंट नहीं है उस कर्म में. हाँ, उससे पूरा निष्काम करने के लिए क्या भाव लेके आए? बिकॉज अभी तो मैंने बताया ना, जैसे आम के बीज आप बो रहे हो, आपको मालूम ही नहीं है किसको इससे फायदा होगा, आपको नहीं हो रहा, पक्का है. ठीक है, मतलब अगर हम किसी की सेवा करने जा रहे हैं तो विल दैट विदाउट एनी, मतलब आशीर्वाद मिले नहीं मिले, बस हमारा मन की इच्छा है, हम वी आर फीलिंग गुड अबाउट डूइंग दैट, विल दैट मेक अ डिफरेंस? या दैट विल मेक यू फील गुड, दैट इज गुड नाउ.
वो अच्छा कर्म है, That लेकिन is आप good. उसके बाद और कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। Yeah, this is what I'm saying. उसके साथ Whatever सेल्फी is नहीं being लेनी done, है, फिर उसके साथ सेल्फी लेके इंस्टाग्राम में पोस्ट नहीं करना है। point taken. Yeah, वो बिल्कुल नहीं करता मेरा। ठीक है, मैं just wanted to add, I'm just giving understand you an few things. example how people do it. Even if they do something good, they will take a photograph and do something, you know, वो सब नहीं करना है। पब्लिसिटी नहीं करनी, शो ऑफ नहीं करना, कर्म करो और उसको जैसे बोलते हैं नेकी करो और कुएं में डाल। ये मैं डाल, ठीक सर। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? बाकी सब बढ़िया है। We will discuss more on this. If you have any doubts, we can have a topic continued next week. But today, this week, I need to close. Right? God, it's Yes, I will nice. take last question from Anup ji. Anup ji, go ahead. So I just wanted to share my experience of my spiritual journey and my connection with divine and my how the prayers are answered. So obviously with life and with change in life events and more different people coming into your life, different things coming into your life, different frames changing. तो मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कई प्रेयर्स तो हैं जो एक ही दिन में आंसर हो गई, कई हैं जो चले जा रही हैं, कुछ पार्टली आंसर हुई हैं, कुछ किन्हीं का फॉर्म चेंज हो गया है या कई अभी तक आंसर नहीं हुई है। सो पेशेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और आपको वो लगे रहना चाहिए। और दूसरा जो अभी आपने जो एक एग्जांपल दिया था कि कई लोग करते हैं और पोस्ट कर देते हैं, वो एक उस चीज से बहुत बच के रहना चाहिए। अगर इफ यू आर अवेयर ऑफ ईगो, नहीं तो इट ब्लोट्स योर ईगो, पीपल विल स्टार्ट आंसरिंग, पीपल विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, पीपल विल स्टार्ट क्लैपिंग, पीपल गिव थम्स अप। तो आदमी फिर उस चक्कर में हो जाता है कि मैं अब नेक्स्ट पोस्ट क्या डालूं, तो वो फिर एक पोस्ट के लिए जीने लगता है आदमी, और वो कहीं भी किसी को एक अंडा देगा फिर, या किसी को कुछ करेगा या खाना खिलाएगा, उसकी फोटो लेके डालेगा। तो दैट इज लाइक समथिंग आई हैव फाइंड वेरी विशियस टू सेल्फ एंड योर स्पिरिचुअल एलिवेशन। तो नेकी कर, कुएं में डाल, लिव अ सिंपल लाइफ, बी ह्यूमन, ह्यूमिलिटी से जियो एंड ऑलवेज हैव ग्रेटिट्यूड, थैंक्स, बिकॉज जान है, जहान है, हाथ पैर चल रहे हैं, घर है, छत है, next meal is taken care of. So which we are anyways 1 or 2% of the upper layer of the world. We are computer literate, we can speak English. So वही बहुत है। और इलॉन मस्क, आई डोंट नो क्यों इलॉन मस्क हर एक का आजकल वो बना हुआ है, वो हर एक नहीं बन सकता, पर जो आप हो आप उससे कम नहीं हो। आप अपने फैमिली के लिए इलॉन मस्क बन जाओ, अपने सोसाइटी के लिए इलॉन मस्क हो जाओ, that will be enough for your spiritual elevation. Absolutely. Focus on your हर next एक सोल life, की your जर्नी अलग है, spiritual elevation. हर सोल की Yes. जर्नी अलग है। गिवन ए चॉइस, not everybody will become Sachin Tendulkar, not everybody will become Elon Musk, not everybody will become Amitabh Bachchan, है ना? हर एक की अपनी जर्नी है। कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई सर्जन बनना चाह रहा है, कोई हीलर बनना चाह रहा है, कोई ओलंपिक मेडल लाना चाह रहा है। तो एवरीबडी हैज देयर ओन एक्सप्रेशन ऑफ डिविनिटी, ऑफ देयर हाईएस्ट पोटेंशियल। दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, व्हाट इज और माय हाईएस्ट पोटेंशियल एंड व्हाट इंसान विल का जन्म लिया एक्सप्रेस है तो दैट। आप इंसान बनो पहले, दूसरों के लिए हैवान मत बनो। या दैट कम्स विद द वैल्यूज, राइट? यस, वेरी गुड। तो ईगो को ट्रिगर नहीं होने देना है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट, एंड डिविनिटी आपको इन्वोक करनी है, एंड दैट डिविनिटी विल गाइड यू एज पर द full potential expression, and you can say oneness with the divinity, correct? हमारे जो आत्मा के 5 दोष बताए गए हैं हमारे सर ये ग्रंथों में, डिस्कशन बाद में उसमें कर से लेंगे एक सर, ईगो अभी है। मैं नया टॉपिक नहीं शुरू करूंगा, है ना? तो आपने शेयर किया, दैट्स वेरी गुड। इफ यू देयर इज एनीथिंग यू वांट टू शेयर, दैट इज फाइन। No new topics I will not take right now, because we are already 21 minutes into the out of the session. Yes, so thank you Anup ji. As you can be joining in the next session, we will have more time to discuss. Is that okay? Thank you very Yeah, much. that's okay. Thanks a Thank you lot. very much. Have a great day. Have a great week. We'll come back again. Till then, Aham Brahmasmi. Enjoy. Take care. Bye-bye.